Okay, students. Now, question number 8. We have to find the inverse of this given function. We have to prove inverse of this function is this one. Done? So, here, first step to find the inverse of any function. Suppose here function f of x is x square plus 4 is given. So, first step to find the inverse of any function, we have to find another function in terms of y. G of y find karenge. And that domain will be codomain of this function and codomain will be domain of this given function. Done? So, first step is to write x in terms of y. So, here we have considered f of x equal to y. Therefore, this one is x square equal to y minus 4 and therefore x will be plus or minus y minus 4. लेकिन माइनस साइन नहीं कंसिडर करेंगे है ना बिकॉज अवर x बिलोंग्स टू दिस r plus. What is r plus? R plus is the set of all negative all नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स तो हमारा x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन आ सकती थी लेकिन इसका डोमेन जो डिफाइन किया हुआ है वो प्लस पॉजिटिव रियल नंबर है ना. तो यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन कंसिडर करेंगे. डन. सो दिस इज आवर x इन टर्म्स ऑफ y. सो दिस इज नथिंग फ्रॉम द फंक्शन g ऑफ y है ना. g ऑफ y विल बी y माइनस 4. ये हमारा फंक्शन g ऑफ y आ गया. डन. फंक्शन f ऑफ x इज गिवन. नाउ वी हैव डिराइव्ड वन फंक्शन g ऑफ y. Done. Now second step we have to prove two results. Fog y equal to y and gof x equal to x. ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर देंगे उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे कि दिस फंक्शन इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ दिस गिवन फंक्शन. So we have to check these two results, fog y equal to y and gof x equal to x. So here let's start with first, that is fog y. Fog y equal to, what is fog y? It's a f of g of y. F of g of y. Now f of g of y, what is the definition of this function f? It's a fx equal to x square plus 4. x होगा तो स्क्वायर करके प्लस 4 ऐड करेगा. x की जगह पर g of y है तो g of y का स्क्वायर होगा प्लस 4 ऐड करेगा. डन. नाउ व्हाट इज g of y? g of y is this function. It's a square root of y minus 4 whole square plus 4. This is equal to square root का स्क्वायर तो इट्स a y minus 4 plus 4. तो यहाँ हमारा आंसर आ गया कि fog y that is equal to है ना plus 4 minus 4 कट. So fog y equal to y. Fog y equal to y. First proof हो गया. Similarly we have to prove gof x equal to x. So now second one, gof x. So what is gof x? It's the g of f of x. G of f of x. Now what is the definition of function g? G is of y. तो y होगा तो स्क्वायर रूट में y माइनस 4 करेगा. तो स्क्वायर रूट में सपोज f of x होगा तो f of x माइनस 4 करेगा. This is the definition of function. Now what is f of x? F of x is x square plus 4. So here square root f of x is x square plus 4 minus 4. So this will be plus 4 minus 4 cut square root of x square. तो प्लस और माइनस नहीं आएगा सिर्फ प्लस आएगा है ना बिकॉज आवर फंक्शन इज डिफाइंड ऑन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. सो इट्स अ प्लस x. So again we are getting f of x equal to x. Gof x equal to x. Done. And hence we can say function g is inverse of function f and hence f inverse equal to our function g is square root of y minus 4. ये हमें प्रूव करना था. इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ y minus 4. Clear friends? So now you can pause this video and note it down. Okay students, now question number 9. So here question number 9 says that consider one function f from r plus set of all non-negative real numbers r plus 2 close interval minus 5 to infinite. Given by function is given by f of x equal to 9x square plus 6x minus 5. We have to prove this function is invertible function and inverse of this function is है ना. inverse of this function is ये आंसर दे दिया है. ये हमें डिराइव करना है रूट y plus 6 square root of y plus 6 minus 1 upon 3. Done. We have to prove this function is invertible function.
दैट मीन्स इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सो हियर 3 steps are there. First step, given function f of x, writing this given function in terms of y. So it's a 9x square plus 6x minus 5 equal to y. Equal to y ले लिया। अभी क्या करेंगे, writing x in terms of y, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x in terms of y फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम एक दूसरा फंक्शन g of y डिराइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन g of y, है ना। तो सेम मेथड से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो दिस इज वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हो और आपको उसको x के फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे। सो हियर वी आर गिवन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। डन। सो हियर दिस इज y इक्वल टू, now we have to write this equation in terms of x. So here 9x square plus 6x is given. So 9x square plus 6x. Now we are completing this square, है ना। We are making the use of completing square method. सबको पता है completing square के लिए देखो 9x square plus 6x ये middle term, तो last term एक 1 missing हुए, so it's a 9x square plus 6x plus 1. So it's a perfect square trinomial. Plus 1 ऐड किया, minus 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। So this is equal to 3x plus 1 whole square minus 5 minus 1 6. Done. This is known as completing square method. तो अभी देखो this is 3x plus 1 whole square equal to, तो x के फॉर्म में इजीली आ जाएगा। Taking this minus 6 on this left hand side, so it's a y plus 6 equal to 3x plus 1 whole square. Now we can take square root on both sides, so 3x plus 1 equal to, आप बोलेंगे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6, लेकिन माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो x है वो कहां से बिलोंग टू है, x इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगी। एंड देयरफॉर 3x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 1, और ये 3 डिवीजन में जाएगा, सो होल डिवाइड बाय 3। Done. So writing x in terms of y. So this is nothing but the function g of y. क्या आ गया हमारा ये फंक्शन g of y. So now we can write our g of y is, है ना, g of y is nothing but the x in terms of y. Done. So it's a square root of y minus 6 minus 1 by 3. ये g of y हमारा क्या होने वाला है, जो गिवन फंक्शन f of x है उसका इनवर्स होने वाला है। देखो, लेकिन इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन g ऑफ y के लिए fog x ना, fog y इक्वल टू y एंड go of x इक्वल टू x है, तो दोनों रिजल्ट प्रूव करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ fog x. Fog x is nothing but the f of g of x. f of g of x. What is the definition of function f? f की डेफिनेशन है ना, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 कर रहा है, तो x की प्लेस पर g ऑफ x है, तो क्या करेगा, तो 9 इंटू g ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू g ऑफ x, 6 इंटू g ऑफ x माइनस 5। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 g ऑफ x का होल स्क्वायर। व्हाट इज आवर g ऑफ x, ओहो fog y आएगा, fog y y करो y, fog y, और ये y है ना। सो व्हाट इज आवर g ऑफ y, g ऑफ y इज स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 1 बाई 3, तो पूरा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 1 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू g ऑफ y इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 1 बाई 3 माइनस 5। नाउ दिस इज इक्वल टू, है ना, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 9, तो ये 9 से 9 कट हो गया, और इसका रूट y माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 और इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू y माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5। सिंप्लीफाई करो, प्लस 2 माइनस 2 कट, और ये क्या था, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, है ना, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये कट हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ y, तो यही तो लाना था हमें।
So it's a fog y equal to y, fog y equal to y. डन स्टूडेंट्स. उसके बाद दूसरा रिजल्ट था, क्या था? गोफ एक्स. कहां पर करें? यहां पर ही कर देते हैं. गोफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसके इक्वल टू एक्स लाना है. So what is the definition of g? It's a square root of y. y की प्लेस पर हमारा f of x है, so it's a square root of f of x, square root of f of x minus 6 minus 1 whole divided by 3. Now this is equal to square root of f of x. What is f of x? F of x is here 9x square plus 6x minus 5. So it's a 9x square plus 6x minus 5 minus 6 plus 6 minus 5 माइनस 6, है ना? साइन में कुछ मिस्टेक की है ऐसा लग रहा है. 9x स्क्वायर प्लस वेट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. सो इट्स अ माइनस 5 माइनस 6, और ये आ गया माइनस 1 बाई 3. सो हियर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 3x प्लस 1, है ना? ये प्लस 5 होना चाहिए आई थिंक, ये प्लस 5, है ना? ये भी प्लस 5. एक मिनट, क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9. So here function f from r plus to close interval minus 5 to infinite. Function is defined as f of x equal to 9x square plus 6x minus 5, so that f is invertible function and inverse of function is square root of y plus 6 minus 1 divided by 3. This given function is invertible function and उसका इनवर्स ये आएगा, वो हमें प्रूव करना है. डन. तो चलो इनवर्टिबल फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हमारे कंडीशंस फुलफिल करेंगे. सो नाउ फर्स्ट वन, हियर गिवन फंक्शन f of x, राइटिंग x in terms of y. So f of x is 9x square plus 6x minus 5. Taking this one as a y, writing x in terms of y, जैसे हमारा फंक्शन g of y मिलेगा. डन. So here what is y? So here we can write y equal to 9x square plus 6x minus 5. Now here we have to write this one in terms of x. So here we'll complete this square, completing the square method, है ना? स्टैंडर्ड 10 में डिस्कस किया था. So 9x square, ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, उसके लिए लास्ट टर्म आएगी 1. देखो 3x plus 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 ऐड किया तो माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. So this is our perfect square trinomial. So this one is y equal to, ये हो गया 3x plus 1 का होल स्क्वायर minus 5 minus 1, that is equal to 6. डन. माइनस 6 इस साइड आएगा, तो y plus 6 equal to 3x plus 1 होल स्क्वायर. अभी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3x plus 1 equal to, प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस y plus 6, लेकिन माइनस साइन कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज ओवर x इज फ्रॉम दिस डोमेन एंड डोमेन इज r प्लस सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ही लेने, तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन कंसिडर कर रहे हैं. सो हियर 3x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1, और ये 3 यहाँ से डिवीजन में जाएगा तो ये 3 हो गया. डन. दिस इज आवर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y. तो अभी हमारा g ऑफ y मिल गया, g ऑफ y, और ये g फंक्शन ही हमारा इनवर्स फंक्शन होने वाला है. देखो y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, देखो ये इनवर्स लाना है. तो ये g फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन कब होगा? g फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन कब होगा? जब हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे. डन. विच टू कंडीशंस? fog y equal to y and gof x equal to x. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम डायरेक्ट अनाउंस करेंगे कि हमारा g फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन है. तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा. सो हियर लेट्स ट्राई टू solve this one. Fog y is nothing but the f of g of y. Now what is the definition of function f? x होगा तो 9x square plus 6x minus 5 देगा, तो x की जगह पर g of y है, तो ये क्या करेगा? तो 9 को मल्टीप्लाई करेगा g of y के स्क्वायर के साथ,
9 into g of y square, 9 into g of y square plus 6 into g of y minus 5. Now this is equal to 9 g of y का whole square. This is our g of y. So g of y is square root of y plus 6 minus 1 by 3 whole square plus 6 into g of y, that is equal to root y plus 6 minus 1 by 3 minus 5. Now this is equal to स्क्वायर करो तो न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर 9 कट हो जाएगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस वाई होगा. तो ये y प्लस 6 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 का स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू रूट y प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1. ये हो गया 3 2 6. तो दिस वन इज 2 इंटू रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5. तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस कट प्लस 6 plus 1 7 minus 7 cut, this is equal to y. So here we have proved that fog y equal to y. Done. First condition आ गई fog y equal to y. उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करनी है, gof x equal to x. इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं. So now gof x. So what is gof x? Gof x is nothing but the g of f of x. Now अभी ये g की डेफिनेशन चलेगी. What is the definition of function g? अगर y है तो स्क्वायर रूट में y प्लस 6 करेगा, तो y की प्लेस पर f ऑफ x है तो क्या करेगा, स्क्वायर रूट में f ऑफ x प्लस 6 करेगा, माइनस 1 करेगा और होल डिवाइड बाय 3 करेगा. डन. नाउ f ऑफ x की वैल्यू, व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज दिस वन. सो इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3. दिस इज इक्वल टू, देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो वो हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाहर है डिवाइड बाई 3. स्क्वायर रूट कट होगा तो इट्स 3x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3, ये सब कट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू x एंड हेंस वी प्रूव gof of x equal to x. Done. So these both conditions are fulfilled. Hence inverse of function we can say g is, है ना, यहाँ पर लिखेंगे g is inverse of f and hence f inverse equal to g, this one, square root of y plus 6 minus 1 by 3. ये प्रूव हो गया. Clear friends? So this is your question number 9. Now pause this video and note it down. Question number 10. So here function f from x to y is given. Function is invertible function. This function is invertible function. This function is invertible function and hence we have to show that f has unique. Inverse of f is unique. Inverse of f is unique. Unique होता है, ऐसे प्रूव करना है. Done. So here function f from x to y is invertible function and we have to prove if inverse of f exists, it will be unique. Unique मतलब one and only one. किसी भी फंक्शन का सपोज हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स एक ही आएगा, दूसरा कोई इनवर्स नहीं मिलेगा, है ना. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो. So here to prove this result we will use method of contradiction. Method of contradiction. ये मेथड हमने यूज की थी स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 1 में, है ना, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर के लिए. वहां पर हम क्या कर रहे थे, हम गलत चीज को अज्यूम कर रहे थे और अपने आप को खुद को गलत प्रूव कर रहे थे तो सही हो जाता था. तो यहाँ पर भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे. क्या करेंगे, गलत है ना, गलत अजम्पशन लेंगे. तो यहाँ पर प्रूव करना है कि f हैज इनवर्टिबल फंक्शन एंड द इनवर्स इज यूनिक. तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि लेट g1 एंड g2 are two different inverse exist for given function f. फंक्शन f के लिए टू डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट हो रहे, ऐसा हम अज्यूम करेंगे. डन. सो इफ टू डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट, व्हाट वी कैन से fog 1y equal to y and fog 2y
इक्वल टू वाई, ऐसा आएगा, है ना। इनवर्स एग्जिस्ट के लिए देखो ये था हमारे पास फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और फंक्शन ला रहे थे जी फ्रॉम वाई टू एक्स, है ना। और यहाँ पर कंडीशन थी दोनों फंक्शन के लिए फोग वाई इक्वल टू वाई आ रहा था एंड गोफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा था। तो क्या हम इस चीज को ऐसा लिख पाएंगे, है ना। इट इज ऑलरेडी गिवन फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और दो इनवर्स हो रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक था, अगर दो होगा तो क्या लिखेंगे, फोग वन वाई इक्वल टू वाई एंड फोग टू वाई इक्वल टू वाई, कैसा लिख पाएंगे। डन। तो दोनों इक्वल टू वाई है, कंपेयर करवाएंगे, हेंस फोग वन वाई इक्वल टू फोग टू वाई। सो फोग वन वाई को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई। Done. Now here we are given that function f is invertible function. तो invertible function कैसा होता है, it's a one one function and on two function, है ना। function f is one one function. So here we are using one oneness of this given function which is already given in your hint, है ना। we have to use one oneness. one oneness क्या होती है, so for x1 x2 belongs to, है ना, x डोमेन के लिए क्या होगा, f of x1 equal to f of x2 and hence their elements are equal. f of x1 equal to f of x2, so x1 x2 दोनों equal होंगे जब function 1 1 होगा। तो here our given function is invertible function, that means it's 1 1 and 1 2. So here we can write instead of x1 and x2 we can say g1y equal to g2y. सो g1y एंड g2y यहाँ पर तुमने अज्यूम किया था कि ये दोनों डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट है, लेकिन ये दोनों तो कैसे आ गए, इक्वल है, एंड हेंस वी कैन से इनवर्स ऑफ f इज यूनिक। यूनिक है, ये दोनों डिफरेंट कंसीडर किए थे लेकिन हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। वी कैन से इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। Okay students, now question number 11. So here one function from 1 to 3 to ABC is given. This is domain of function and this is codomain of function. The definition of function is f of 1. f of 1 is A, f of 2 is B and f of 3 is C. This is given. So here we have to find the inverse of function. Two parts of the questions are there. First you have to find the inverse of this given function and you have to show that inverse of that function is nothing but the function itself. Done. So here according to definition of this function we have to find the inverse of function, and for any inverse we require function must be 1 1 and 1 2 function. So here domain of function is 1 2 3 and codomain of this function is element a b c. According to definition of this function, f of 1 image of 1 is A, image of 1 is A, image of 2 is B and image of this 3 is C. So here it is clearly seen that this function is 1 1 and 1 2. This function is 1 1 and 1 2. Done. This is 1 1 and 1 2 function. It is bijective function, hence inverse of this function exists. Inverse of this function exists and hence we can find inverse of function. Inverse निकालने के लिए पहले तो inverse exist होना चाहिए. So here inverse exist हो रहा है। Done. तो अभी इसका inverse निकालेंगे। तो inverse क्या होगा? So here inverse function f is given. We have to find the inverse of this function. So let's assume that another function. Let's say function g from, है ना, हम assume करते हैं function f from x to y is given suppose. Then we find another function from the codomain to domain of this function. This is given function f from this domain to codomain. So for this another function, domain will be codomain of this function. So here domain is ABC and codomain of this function is domain of this given function 1 2 3. Done. And let's say this function is g of A equal to 1, g of B equal to 2 and g of C equal to 3. This is one function g. Done. And here one function is there and this g is said to be an inverse of this function f if two conditions are fulfilled, and that two conditions are of x equal to x and fog y equal to y. Done. If these two conditions are fulfilled, we can say this g is nothing but the inverse of this function f. So let's try to verify this both the conditions.
first we will try to verify g of x. So here g of x, g of x is there, g of x, so it's a g of f of x. Now g of f of x, here x is taken from the domain of this function f. X is the element of domain of the function f. So here for this function f, domain is 1 2 3. Domain is the set with the elements 1 2 3. So here our x can take different values as 1 2 and 3. So if you are taking x equal to 1, if you are taking x equal to 1, it will be g of f of 1. Done. So what is g of f of 1? F of 1 is already given. F of 1 is image of this function, image of the element 1 is a. So f of 1 is a. Done. And we have assumed that g of a is nothing but the 1. So here we can say g of f of 1 equal to 1. कंडीशन फुलफिल हो गई. ये कंडीशन सारे एलिमेंट के लिए फुलफिल होनी चाहिए. सो लेट्स टेक x इक्वल टू 2. तो क्या होगा? इट्स अ g ऑफ f of 2. g of f of 2 इक्वल टू 2 आना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू g of f of 2, g of f of 2. What is f of 2? F of 2 is b. So g of b, what is g of b? G of b is 2. This is equal to 2. So g of 2 equal to 2. Done. Now let's try to check it for x equal to 3. If you are taking x equal to 3, if you are taking x equal to 3, then g of 3, this is equal to g of f of 3. G of f of 3. F of 3 is c. G of c. G of c equal to 3. This is equal to 3. So here g of f of 3 equal to 3. So all the conditions are fulfilled, and here we can say this first result is verified. G of f of x equal to x. Done. Then we have to verify. चलो खानो છે ને એને અંદર છે. f of g of y equal to y नीचे. So now for y. Now for y is nothing but the f of g of y. F of g of y. So here if we have to consider this y from the domain of this function g. Function g is there and domain is element a, b, c. So here y can take different values of, y can take different values as a, b and c. So first we are taking y equal to a. First we are taking y equal to a. Y equal to a, and this one is f of g of a. F of g of a. What is g of a? G of a is 1. So f of 1 is, what is f of 1? F of 1 is a. So here again, fog a equal to a is there. We have to verify this one for all these three elements. So this is for y equal to a. Now if you are taking y equal to b, so this one is f of g of y. So f of g of b. So this will be f of g of b. So f of g of b, students, g of b is 2. So it's f of 2. And what is f of 2? F of 2 is b. So for f of g of b equal to b. Done. Now we are taking y equal to c, and hence f of g of y and y equal to c is f of g of c. That is equal to f of g of c. F of g of c is g of c is 3. So it's a f of 3 and f of 3 is equal to c. This is equal to c. Done. So here g of x equal to x and fog y equal to y. For g of x for x equal to 1 2 3 and fog y for y equal to abc is proved. Hence we can say this function g is inverse of this function f. Done. तो यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखते हैं. Hence we can say g is inverse of f. Inverse of f, that means f inverse equal to g. Also हमने डिस्कस किया था कि if f is inverse of g, it's a vice versa. Hence we can say g is inverse of f. Done. So if g is inverse of f, we can say f is also inverse of g, and hence we can say g inverse equal to f. Done. तो इनवर्स तो फाइंड कर लिया. f इनवर्स इक्वल टू फंक्शन g. अभी ये प्रूव करना है f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू f. So let's try with this one.
f इनवर्स इक्वल टू जी, है ना, यहाँ पर लिखते हैं इतने पार्ट में. So if f inverse equal to g, now if you are taking inverse on both sides, so it will be inverse of inverse equal to g inverse, taking inverse on both sides. So if f inverse of inverse equal to g inverse, and what is g inverse? G inverse is nothing but the f, so this is equal to f. So here we have proved f inverse of inverse equal to f. Clear students? So pause this video and note it down, है ना, अच्छा खासा. Question number 12. Question number 12 is, if function f from x to y, if function from x to y is invertible function, then we have to prove that inverse of function is inverse of function f is inverse of function f, that means inverse of inverse is f, and also we have to prove that means f inverse of inverse equal to f. So function f from x to y is invertible function, it is given. Prove that inverse of inverse is function itself. ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया, है ना. तो देखो कैसे करते हैं. So here function f from x to y is given. This function is invertible function. It is already given. This is invertible function. So let's say one function g from y to x, है ना, इसकी डोमेन x है, कोडोमेन y है, तो फंक्शन g को अज्यूम करते थे फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन. सो फंक्शन g फ्रॉम y टू x इज सच दैट, है ना, ये इन्वर्टिबल है. इसका मतलब ये हो गया कि fog y इक्वल टू y एंड gof x equal to x. Done. This is invertible function. So here it is given that function f is invertible function. So here we can say g is inverse of f, है ना. f invertible function है, ऐसा already given है, it is already given. So f is invertible function, we can say g from y to x for this both the condition is the inverse of f, hence we can say f inverse equal to g. Clear? ऐसा और भी डिस्कस किया हुआ है. If g is inverse of f, we can write f is also inverse of g, है ना. लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखे ना वही लिख रहा हूं मैं. If g is inverse of f, vice versa, we can say f is the inverse of g. So f is the inverse of g, and therefore we can say g inverse equal to f. Done. Now यहां से स्टार्ट करते हैं. f inverse equal to g. f inverse equal to g. Result number 1. Now taking inverse on both sides. So f inverse of inverse equal to g inverse. What is g inverse? G inverse is nothing but the function f. So inverse of inverse is nothing but the function itself. Done. Already discussed in question number 11. So now you can pause this video and note it down. Question number 13, students. Number. So here function f from r to r. Function f from r to r, which is given by f of x equal to 3 minus x cube raised to 1 by 3. Then what is the value of f of x? f of x की वैल्यू फाइंड करनी है. डन. तो f of x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो देखते हैं. f of x, what is x? x is the element from the domain of this function f. So here let's say f of x, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे f of x. डन. here x belongs to domain of this function. यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से आएगी. So f of x
अभी ये फंक्शन एफ की डेफिनेशन चलेगी। देखो फंक्शन एफ की डेफिनेशन क्या है, जहां पर एक्स होगा, है ना, फंक्शन क्या कर रहा है, अगर इनपुट में हम एक्स डालेंगे तो फंक्शन उसको 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स है, तो क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ पर होगा 3 माइनस एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स का क्यूब और उसका 1/3 पावर होगा। डन। नाउ अभी एफ ऑफ एक्स, फिर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू ये है, इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3 पावर, और उसका कितना पावर है, उसका 3 पावर, और रेस टू 1/3 है। डन। सो दिस इज इक्वल टू, देखो 1/3 पावर 3 पावर कट, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और उसका 1/3 पावर। डन। 3 माइनस 3 कट, तो ये हो गया एक्स क्यूब का 1/3 power. This is equal to x. So here we have proved that f of fx equal to x. Answer is x. Done. So here question number 14, last question. So for question number 14, we are given that function f from r minus minus 4/3 to r. This is one function which is defined as f of x equal to 4x upon 3x plus 4, है ना। यहाँ पर समझ में आ गया कि -4/3 इसके डोमेन में से क्यों निकाला, क्योंकि x इक्वल टू -4/3 यहाँ पर पुट करके फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन r टू r ही है, लेकिन r की जो डोमेन की वैल्यू उसमें से -4/3 रिमूव कर दिया, इसके वैल्यू 0 हो जाने से, है ना, इसलिए ये था, इसके लिए कुछ घबराना नहीं है। सो इनवर्स ऑफ f, so inverse of f, that is from mapping, है ना, the range of f to r minus 4/3 is given by, so inverse of this function निकालना इन शॉर्ट, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालेंगे, कैसे करेंगे, रेंज f from, है ना, रेंज दिखा हुआ है यहाँ पर, रेंज f from r minus f range to r minus 4/3. So here we have to find the inverse of function. So here function f of x equal to 4x upon 3x plus 4. Let's say this is equal to y. Done. Now we are writing our x in terms of y. So here writing x in terms of y. So it's a 4x equal to, cross multiply, it's a 3xy plus 4y. ये टर्म को इस साइड लेंगे तो x कॉमन आएगा, so it will be 4 minus 3y, that is equal to 4y. Therefore our x will be 4y upon 4 minus 3y. ये हमारा फंक्शन आ गया g of y. This is equal to 4y upon 4 minus 3y. Done. तो ये आपका आंसर है। Done students. So now you can pause this video and note it down. चलो क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन,